10 ऑफिसर खड़े यहाँ पे, सब खड़े विद लॉन्ग फेसेस। चैरिटी का ऑफिस खोल लो एक यहीं कहीं पे और लोगों से कहो भाई पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा दो तो प्लांट लगाएं। सरकार के पास पैसा है नहीं, खजाना खाली ऐसा दिख रहा है मेरे को, तो भीख मांगो, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और पब्लिक का काम करो। अगर अमृत प्रोजेक्ट है तो उसको कम से कम कुछ तो इज्जत करो अमृत की। ये सब अमृत के अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ चलेगा। 32 करोड़ की वो मशीन आनी है, उसके बारे में क्या लिखा आपने? हम यहाँ चाह रहे हैं इमीडिएटली काम शुरू हो, वहाँ 1.5 महीने प्रपोजल जा रहा है। वहाँ 27 करोड़ रुपए का आपने उसमें जो प्रपोजल भेजा है वो भेजा है स्वर्णरेखा रिवर का। ऐसा क्यों किया आपने? Later on it is sent to state government also. अरे what state government will do with this? I fail to understand. You people are IAS officers. You are not supposed to know what kind of proposals to be set on Namami Gange. This is the confusion you are creating. Why did you do that? If you want to send your sewage proposal and drain water proposal to government, why did you add on to the Namami Gange project? Where is the revised proposal for Namami Gange? Where is the revised proposal for Namami Gange? स्वर्णरेखा रिवाइवल का पैसा कितना चाहिए आपको? आपने लिख के दीजिए, दोबारा भेजा। इसके बाद 13-12 के बाद क्या हुआ? सर 13-12 के बाद ये जो इनका जो रिस्पांस है नमामि गंगे का, for the purpose of sewerage line and their cutting off from the main line of the flow of the stream. Mr. Counsel, yes, don't tell me stories. Madam. This communication from Ministry of Rashtriya Swachh Ganga Mission suggest that you are utterly confused. The total exercise was futile. First, government of India will only give you this Namami Gange project mission will give you money only for revival of Swarnrekha river. It will not spare funds for sewage line or drain water. Your officer has come? Who is the officer? Did you have any meeting with the commissioner? Last time you had come here, na? Yes. So you had asked for some proposal. Whether did they ask for any meeting with you? No, sir. They asked me what is their response. So I coordinated with the ministry. They said कि उनका जो major portion है वो drainage और sewage network. ये इनका proposal कब का है ये? अक्टूबर। तो अक्टूबर के पहले तो हम लोगों ने कॉग्निजेंस ले लिया है ना केस का, तब तो मैटर पेंडिंग था यहाँ पे, तो क्यों जोड़ा आपने इसमें? आपने को समझाया नहीं था कि सीवेज लाइन का और ड्रेन वाटर का इसमें मामला नहीं जुड़ सकता है? मैंने बताया था एसटीपी के लिए ही वो पैसा देते हैं, क्योंकि वो जो रिवर वाटर है उसमें मिक्सिंग ना हो, एसटीपी प्लांट लगा के उसको फ्यूल करने के लिए। नहीं तो एसटीपी प्लांट का तो इसमें है ही नहीं। 27 करोड़ का है, 27 करोड़ का बात उसी का ही है। 599 करोड़ आपने दे दिया सीवेज लाइन का। क्यों कर रहे हैं भाई इस प्रकार से? आप क्या चाहते हैं आप बताइए? What do you want? They will coordinate with Namami Gange and as per. नहीं कोऑर्डिनेट नहीं। अभी तक आप क्या करते रहे? अभी बुद्धि में ताला लगा हुआ था क्या? क्यों किया आप लोगों ने इस तरीके से? अगर आप चाहते हैं मुकदमा इस कोर्ट से चला जाए तो हम जबलपुर भेज देते हैं। कोई नहीं चाहता। नहीं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते आप। अगर आपको लगता है बेंच इनकन्वीनियंट है तो हम मेन सीट भेज देते हैं इसको, तो वहां आप बहस करते रहिएगा। भाई व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम?
It is very disappointing. मतलब आप लोग की सीरियसनेस है नहीं, केवल यही है पास ऑन द बक. अपनी प्रॉब्लम किसी और के पाले में डाल दो, उलझे मामला उलझता रहे. मिस्टर हर्ष सिंह, आपको देखना चाहिए था ना, ये आप किसकी एडवाइस में आपने भेजा ये? जब कोर्ट में केस था उसके बाद मीटिंग हुई है लगातार. मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसके लिए फंड क्या सकता है सर. तो 2 जगह भेजा, एक नमामि गंगे भेजा. उनका प्रपोजल ये आया कि हम एसटीपी प्लांट के लिए दे देंगे, बाकी हम सीवर के लिए नहीं देंगे. आपने कभी प्रपोजल भेजने के पहले पूछा उनसे? सर हम लोग कोऑर्डिनेशन में. क्या कोऑर्डिनेशन में थे आप? अगर आप कोऑर्डिनेशन में होते तो वो आपको बताते कि भाई आप इसमें सीवेज वाला मसला नहीं डाल सकते. सर उन्होंने ये बताया था कि आप भेज के फिर हम लोग इस पे विचार करेंगे. विचार करके फाइनली रिजेक्ट कर दिया हमारा प्रपोजल. वो कहते कि यही प्रॉब्लम है. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. जहां कुछ मसला हुआ कमेटी बना दो. कभी किसी को निर्णय लेने की क्या कहूं मैं इस चीज को, आई मीन दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन. हर आदमी अपनी कलम बचाता है. सब गोलमोल. भाई कुछ तो अपने अंदर देयर शुड बी सम कॉन्शियंस इन यू टू टेक अ डिसीजन. You may be wrong while taking a decision, but one has to take a decision. And if you don't take a decision, things will move on from one table to another table. It requires application of mind. Why one should not apply its mind? What for we all are paid? If we as judges do not decide the cases, and just pass an order, decide the representation, do this, do that, are we justifying our salary? No. We have to take a decision, this way or that way. Similarly, you are expected to decide, maybe in a different manner. But once we have taken a cause, public cause, then in all fairness, you should apply your proper mind. How to go about it? Why we are sitting here? Only to facilitate. अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, फंड्स नहीं दे रही है, तो वी आर हियर टू इंश्योर दैट यू गेट फंड्स. आपका काम तो काम करना है. जो जहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ हिकअप्स हैं, जहाँ बॉटलनेक्स है, वो हम क्लियर करेंगे. बट ऐसे ही आप करोगे तो कैसे काम होगा? अभी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, सुनिए मेरी बात आप, वो रिपोर्ट बनी है जिसमें नमामि गंगे के ऊपर कितना खर्चा आएगा. वो कहाँ है? वो रिपोर्ट कहाँ है जिसमें ये होगी हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रिवाइवल ऑफ स्वर्णरेखा रिवर ओनली? Where is that document? Sir, for that sewer connection, we have already sent to the state. फिर वही वाली बात. For revival of Namami Gange, we are again coordinate with. No, you please. Which means you have not prepared a report so far. You do not have any idea. You have not worked as to how much money is required for revival of Swarnrekha River so far. Only you have made a provision of STP for purifying of the water. जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसका उस पर कोई एक्सरसाइज हुई ही नहीं. And you want to attend that conference at 1 o'clock. If you don't have any proposal, what kind of conference will you be attending? Who is conducting the conference? The Chief Secretary. For what? Chief Secretary, Government of India, Madhya Pradesh. Urban Administration for allocation of. Your Chief Secretary will give you money for Swarnrekha River? Solid waste. No, I want you to tell me whether your Chief Secretary will give you money for Swarnrekha River. No, it's state has to issue. Huh?
State has to issue the funds. They are only coordinating on. I am asking this question: Yes, sir. whether the state government will release the funds for revival Salt Lake River or not? But they will do it for the sewerage, for the Namam. मतलब मिस्टर खोद, आप भी उतने ही उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी में आपका डिपार्टमेंट चल रहा है. आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं हमारा. स्वर्ण रेखा रिवर के रिवाइवल के लिए राज्य शासन आपको पैसा देगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए. That will be provided by Namami. तो बार बार मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ. आपने कहा साहब नमामि गंगे का हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला है, उसमें हमें प्रेजेंटेशन देना है. आपका प्रपोजल तो वहां गया नहीं अभी तक. प्रपोजल 27 करोड़ का आपने एसटीपी का दिया हुआ है. तो किस बात का आप प्रेजेंटेशन करेंगे और किस बात का वहां पे प्रपोजल एक्सेप्ट होगा आपका? सब हवा में बात चल रही है. That is for solid waste management. We will exclude that proposal from the Namami Gange project and हद होती है. तो बड़ा एलिमेंट्री चीजें हैं. separate revise 10 ऑफिसर खड़े हैं यहाँ पे, सब खड़े विद लॉन्ग फेसेस. separate proposal for revival we will send, but in coordination with the Namami Gange office. And this sewerage project has already been sent to the state government and the. This is how they are working. Will do it. Will do it. सेकेंड क्या है? Second is solid waste. नहीं, थोड़ी देर बाद में आएगा. पहले सीवेज लाइन का बताइए हमको आप. हाँ, सीवेज लाइन का मतलब the proposal as per the direction of the honorable court. दिखाइए सीवेज लाइन क्या प्रपोजल है आपका. Yes, ma'am. We have filed it yesterday, madam. The compliance report. Forget about compliance report. You show me what is the sewage report. What is how much money is required for sewage separate line and for flow of grade water. But for sewerage, 567 crore has been sought from the state government. हाँ. For cutting of the lines which are flowing the sewerage in the flow of the stream of the river, for making a separate. I do not want stories. Yes. I just want your plan. Yes. That what is your plan for providing separate sewage, and what would be the place where you will be collecting and you will be flowing this sewage water, and thereafter solid waste management. Yes. So where is your total plan? जो प्लान बनाया है सर्वे करने के बाद 13 किलोमीटर की पहले से लाइन डली हुई है 30 साल पहले की, जो जगह जगह पे टूट गई है. इसमें पूरी ट्रंक लाइन एक रिप्लेस होगी सर. ट्रंक लाइन का डायमीटर बहुत वेरी करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधे जाता है. तो फ्रॉम 1800 mm से लेके 24 mm तक की डिज़ाइन कर दी गई है. ये लाइन प्लस जहाँ जहाँ से नाले में सीवेज आता है सर, वो भी लाइन हम इंक्लूड करेंगे. ये पूरी लाइन लेके सर हम लोग सर एक बीच में प्रेशर सिस्टम लगाएंगे, उसको लेके जलालपुर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाएंगे सर. हमारा जो अभी ट्रीटमेंट प्लांट है सर, वो अभी उसमें बहुत कैपेसिटी है सर. 40 MLD अभी जो जाएगा उसको करेंगे. उसके अलावा फिर एक और ट्रीटमेंट प्लांट वहीं पे जलालपुर के पास हमने देखी है, वहीं पे लगेगा. तो ये पूरी सीवेज जितना आएगा सर पूरा जाके फिर ठीक है. नहीं तो ये सीवेज लाइन ले करने का जो काम है, इसकी वजह से हमारा स्वर्ण रेखा रिवाइवल का तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा. सर नगर निगम के स्कोप में तो यही है सर कि पूरा सीवेज जितना भी पानी गंदा जा रहा है उसको हटाना है सर. ये उसका तो मेजर पार्ट है सर, क्योंकि सीवेज ही लाइन बहुत पहले डली है 4 से 40 साल पहले सर. वो जगह जगह से डैमेज. नहीं तो उस वहां पे ब्लॉक करने के पहले आप रास्ता निकालो, पानी जाएगा कहाँ? भाई ऐसा है कि किसी चीज को बंद करने के पहले ये तो ऑल्टरनेट निकालो कि वो पानी बाकी जाएगा किस तरफ. अभी भी सर पानी जो जा रहा है सर वो हमारे प्लांट में पहुंचता है, पूरा नहीं पहुंचा, जगह टूट गया, वो हम कंटिन्यू करेंगे. हम जो लाइन डाल रहे हैं सर, ये लाइन इसको डिस्टर्ब करते नहीं. अलग से जो इसका बैंक का सॉल्ट रेखा बनाना है सर, बैंक इसका, उसमें से हम लोग लाइन डालेंगे डिजाइन. अभी तो आपको दो काम करने हैं. जितना सॉलिड वेस्ट और सीवेज वाटर स्वर्ण रेखा रिवर की लाइन में जा रहा है उसको ब्लॉक करिए. उसको ब्लॉक करके उसका डाइवर्ट करिए पहले उसको आप. ये तो जो सेपरेट लाइन आप बना रहे हैं ये तो लंबा प्रोजेक्ट है आपका. लेकिन अभी जो हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं उसके लिए पहले जो आउटफ्लो है उसके अंदर रिवर ट्रैक पे उसको ब्लॉक करिए आप.
और उसको ब्लॉक करके डाइवर्ट कर रहे हैं ना. Sir, actually, the practical problem is that blocking will not serve the purpose until there is a fresh line connecting to the Jalalpur for the sewage treatment plant. Because if the flow and the amount of sewage which is coming, it is not possible from the old line to again send it to this destination place. Because they are not reviving. Those lines are choked. Those lines are of 40 years back. And they are, at places they are broken. So how long will you take? But the project is of 2 years. Because it's a 13 kilometers, both sides 26 kilometers. So for 2 years there shall be no work done for revival of the Sonaka river. For 2 years you will be working with Chief Secretary regarding funds, then there would be some comments, some clarifications, and on papers things will move for another 5 years. So you want to scuttle the attempt of this court to ensure that there is a progress in the work. For last 6 months we are dealing with the matter, and up till now you have not been able to get the funds. And to top it all, you created confusion at Namami Gange level also. So you do not want to work. Our efforts to ensure that the track is cleared, there is a proper plantation on both sides, all will go futile. All right, then we will call your secretary. Then he will answer, because we will not leave it in lurch. We will reach to a logical end. If you are not able to work, then you disqualify yourself to be here. Forget about it then. Yes, Mr. Modi, who should be called here? If commissioner is not being helped by the secretaries at the Bhopal, at the state level, then we will call somebody who is able to accountable for the civic amenities in Gwalior district, Gwalior city. You have sufficient funds. Let me now be very clear on this. To dole out. Don't force me to speak more. But you do not have funds for revival of the drainage system, for providing that solid waste management machine. 32 करोड़ की वो मशीन आनी है. उसके बारे में क्या लिखा आपने? उसके बारे में क्या आया उसके बारे में? उसके बारे में प्रपोजल भेज दिया फॉर एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट केदारपुर. We have filed yesterday. क्या हुआ उसमें अभी तक? वो अभी इट इज पेंडिंग विद द गवर्नमेंट. तो कब तक पेंडिंग रहेगा वो? कब भेजा है आपने? ये भेजा है सर. वो 5 तारीख को भेजा है सर. 5 जनवरी को भेजा आपने? 5 जनवरी. लास्ट पेशी कब हुई थी? 22/11 के बाद आपने उसकी कंप्लायंस 5/1 को करी है. But according to the officer Malad, because that survey was required to be done by the consultant, and then the proposal has been sent. Mr. Khod, I am not happy at all. Mr. Harsh Singh, please take it on a serious note. Otherwise, we all will be in trouble. Because court proceedings have to be taken on a serious note. If you think that you can do away with, then you are sadly mistaken. You please do it. And Mr. Modi, if this proposal has gone there for release of 30, how much money you want? 100 crore they have already received. From where? From government, this is statement recorded. Mr. Modi, I think today also we are cutting a very sorry figure for the state today.
You know that for last 3 hearings, we have been taking the matter on a detailed note, and you have no instructions. Have you ever bothered to read the order sheets? These proposals, give me a copy, I would be able to... What give you a copy? Because they say... Are you here only to take copy and forward it? Are you post office or what? I'll be able to follow it up. What followed up? Have you not seen the order sheet? See the order sheet of 22nd of November. But before that, 5th September is also there. Khirkar has appeared. Yes, sir. Read the order sheet. What we have written in the order sheet. Harsh Singh, Commissioner, Municipal Corporation, is also directed to prepare a proposal DPR for installation of another garbage recycling plant at Kedarpur, and proposal be submitted to Urban Administration Department for its sanction immediately. As it transpires during the course of hearing that as on date, total accumulated solid waste is about 6 lakh tons at Kedarpur. This accumulation is of the period from 2007 till up till now. The plant already installed at the said place has a capacity of 450 tons per day. It may take more than 300 days to recycle already accumulated solid waste, whereas every day collection of solid waste over municipal limits of Gwalior city is about 450 tons. In such circumstances, unless an additional recycling plant is installed, it will be very difficult to tide over the alarming situation in the city of Gwalior due to accumulated solid waste, which has resulted into air pollution and unhygienity in the entire municipal limits. Hence, looking to the gravity of situation, we have a direct that Principal Secretary Urban Administration Department shall give due attention for release of funds to install additional solid waste recycling plant at Kedarpur. What more is required? What more is required? And this order was passed in the presence of the Government Council on 22nd of November 23. And Mr. Harsh Singh, you have sent the proposal on 5th of January. कब सर्वे हुआ आपका? सर अभी हमारी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं 22/11 के बाद आपने कब कंसल्टेंट अपॉइंट किया? सर कंसल्टेंट पहले से सर तो उसने कब काम किया? सर उसने 15 दिन लिए थे सर पूरा करने, रिपोर्ट हमने वेरीफाई की थी। उसके बाद हमने 2 प्लांट सर मैं बताना तो एडिशनली हमारे 2 पॉइंट और थे, वो भी हमने चालू कर दिए सर। तो जो हमारा रोज का कितना है वो भी टेकन केयर हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो दिन बताया वो लिखा गया नहीं लिखा गया? आपको प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, नया प्रपोजल भेजा सामने पूरा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर गलत लिखा हुआ है और आपके पास आप सक्षम है करने के लिए, तो मैं इसको ऑर्डर रिकॉल कर लेता हूँ। उसी डायरेक्शन में सर ये पूरा वेरीफाई करके सर पूरा वेरीफाई। मैं बार आप लोग इस मुतालके में मत रहो। मैं बार कह रहा हूँ, आपको कॉशन कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक अस फॉर अ राइड, प्लीज। जब 22/11 में आपने खुद बताया इन चीजों को, हमने उसको ऑर्डर शीट में लिखा, तो आपने 22/11 के बाद उसमें ढेर बना लगा दिया प्रपोजल भेजने में। हम यहाँ चाह रहे हैं इमीडिएटली काम शुरू हो, वहाँ 1.5 महीने प्रपोजल जा रहा है। अब आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो। जैसा हमारे पास और भी प्लांट है, मैं उसको रिवाइव कर रहा हूँ, उससे और चीजें साफ हो जाएंगी। क्यों है? किसको डिफेंड कर रहे हो आप? गवर्नमेंट को? $100 करोड़ कहाँ में मिले इनको? Sir, 5 September for sewage. 100 करोड़? 100 crore. This is in order sheet dated 5th September. So मिले नहीं है वो under Amrut 2 it is reserved for Gwalior Amrut 2 मिले नहीं। क्या करें उसके लिए बताइए आप? किसको बुलाएं यहाँ पर आप? मिस्टर मोदी, आप इसको मैं परसों लगाऊंगा केस फिर से। I will hear Jaipur tomorrow again. You ensure that whatever funds you have allocated to the state, to the Gwalior city is released. And if they are not working, then no wonder I may call your secretary or chief secretary also. Well, if the High Court orders, the sanctity of the High Court order is undermined, then you will be the last person to budge.
So neither Namami Gange has taken off, nor sewage water system has taken off. Everything is moving on a on paper. क्या किया मिस्टर खोद आपने सीवेज के लिए क्या किया आपने? As per the direction of the Honorable Court, we have submitted our project to the state government. हाँ. And now state. कब भेजा है आपने? It is on 14/12. हैं? 14/12. हाँ, कितना पैसा मांगा है? 567 crore. हाँ. जो एक्चुअली वो जो नमामि गंगे को भेजा था, उसमें वो सीवर इंक्लूसिव था, including the STP. So now the separate sewer project has been sent to the state government for 567 crore. मिस्टर मोदी सर नोट करिए आप. We have informed them in writing with all the caveats regarding possibility of courtlive actions also. But give me 2 days, I'll No, if they are not even listening to you, then we know how to make them understand the language of the court. If they are so unscrupulous that they are not refuse to understand what you are writing them as a legal advisor, then we will call them here in person. Who is that secretary? We will call him here. I'll give you one chance. Come back with a positive statement that says this money will be released on so and so date. You may do it in parts. But 599 crores is not required at a go. It requires to be released in a phased manner. But they have to work on it also. What is your work plan? Have you got a work plan? In how many phases will you complete it? कितने फेज में सीवेज लाइन काम खत्म होगा? कितने फेज में? और एक फेज कितने पीरियड का है? फंड छोड़ दीजिए आप. हाँ, पीरियड. हाँ. 2 years, sir. हाँ. It will take from start of the laying of new sewage lines, sir. हाँ. To shifting of the line, it will take 2 years. Laying of the new sewage line will take around 1.5 years, and shifting will take connection to the plant will take half a year. Total 2.5 years it will take. So up till when will you start? After you receive the money, the 100 crores which is allocated to you, have you ever corresponded with the government for release of the funds? 100 करोड़ रुपए जो एलोकेट हुआ है, उसके बाद कोई पत्राचार हुआ है गवर्नमेंट से आपका? According to the officer, that Amrut project, which is earmarked for this purpose only, as soon as this project is sanctioned, that amount will be released in phased manner, and then the work will start in a phase. ये अमरूद क्या है? Phased manner. हैं? Amrut is the project of the central government, which is funded through the state government for the purpose of laying of this sewer line. तो अमरूद कोई मतलब अमृत का प्रोजेक्ट है क्या है? अमृत है ना? अमृत. अगर अमृत प्रोजेक्ट है तो उसको कम से कम कुछ तो इज्जत करो अमृत की. ये सब अमृत के अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ चलेगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी काम के लिए सिंसियर है तो आप भी तो उतनी शराफत से काम करें. It's a short form of Atal Mission for Rejuvenation of. वो जो भी हो नाम, पर्पस तो पायस है ना? Yes, pious. उस पर्पस को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हो? Yes. लोकल लेवल पे काम तुम ना करो, बदनाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो. अरे आप देखिए, नमामि गंगे में 100 करोड़ रुपए मिल रहा है, 200 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको लेना भी नहीं आता आपको. और अमरूद की बात कर रहे हो. Namami Gange will coordinate with the officers of the Namami Gange today itself, our engineers, and then accordingly for revival a separate project report will be sent. You have to do it within 3 days. I am calling it out next Tuesday. I will not pass any order today. I want government's reaction regarding this proposal, your efforts regarding finalization of the project, then I will move further. I am not at all happy today with the kind of response I am getting from all of you. Yes, who is from PWD?
WRD, हाँ। क्या किया आपने वहां पर? चैनल कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट किया आपने? हैं? हाँ हाँ। तो ये सारे पूरे रास्ते में कहीं सीवेज पानी आ रहा है उसमें? ये मिस्टर मोदी खुद, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? बट सीवर आता है फ्रॉम द सिटी, दिस इज ऑल आउट ऑफ द सिटी। हाँ, अभी वहां से कितना दूर बचा है सिटी हमारे में? वो हनुमान बांध से सिटी स्टार्ट होता है। हनुमान बांध तक आ गए आप? अब उसका आगे कैसे बनाएगा वो, जब तक पानी जब तो सूखेगा नहीं वहां पर? हनुमान बांध से आगे कितना दूर है? और हनुमान बांध से ये स्वर्ण रेखा स्टार्ट होती है टिल जलालपुर। कितना डिस्टेंस है? 13 किलोमीटर। हाँ, तो अब हनुमान बांध के बाद वो क्या काम करेगा है? हाँ, तो मतलब पानी लाने का रास्ता तो ले आए वो वहां तक, अब हनुमान बांध से आपने करना है। और वो फॉरेस्ट वाले कौन है? यस, व्हाट हैव यू डन अप टू दिस, अप टू हनुमान बांध? किसको दिया है आपने? बताइए मिस्टर मोदी को, आप बताइए कहाँ, किस क्या चिट्ठी कहाँ है आपकी? वेयर इज द करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू रिलीज ऑफ फंड्स? नहीं, वो दिन आने वाले हैं कि सरकार के पास पैसा है नहीं, खजाना खाली ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो भीख मांगो, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और पब्लिक का काम करो। अगर यही स्थिति बनने वाली है तो ठीक है, फिर चैरिटी का ऑफिस खोल लो एक यहीं कहीं पे, और लोगों से कहो भाई पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा दो तो हम प्लांट लगाएं। यही कहना चाहते हो आप? कितना फंड मांगा है आपने? सर हमारा टोटल जो पूरा कैशमेंट है उसका सर 74 करोड़ का है। The entire cash वो प्रपोजल कब भेजा आपने? that proposal I sent sir in November sir. Mr. Modi, take note of this also. Proposal to the Forest Department. Sir to the National Mission on Clean Ganga we have also sent that. हैं? Sir क्योंकि वो river rejuvenation, forestry intervention. तो किसको जा? Who will release the funds? Sir either National Mission on Clean Ganga, if they are not able to release the fund, then it's state government. Now, Mr. From Namami Gange, you are there, na? Have you got the proposal? आप ही कहाँ? Show me the document. चलिए, हाँ क्या है? क्या आया? प्रपोजल है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा है? हैं? नमामि गंगे को भेजा लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा वो रिकॉर्ड। ठीक है, हम परसों लगा रहे हैं केस को। परसों सबको आना है यहाँ पे। मिस्टर मोदी, आई एम गिविंग you 48 hours to find out whether the finance department has been consulted or not, and how much funds allocation is in process. I am putting it. Today is Wednesday. We will have it on Friday. Or Monday we will have it. Monday is the Tuesday.
16th we are here again. I am not passing any order today. Sir, 17th is your lordship. 17th, no problem, but